Hi everyone, and welcome back to Silent Healing. Let us check what are your person's energies towards you, what are the energies of your connection, and what are they wanting to let you know. Just a second. So let us check. I have already shuffled up the cards, and I'm using two different tarot decks today. So let us check. सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि there are some hidden matters in your connection with this high priestess. Please try to keep balance in your connection. Try to avoid living in illusion. Simple as that. Okay, reality कितनी भी harsh है, कितना भी आपको if there is something which, if something is revealed, if some truth is revealed, if some truth is being revealed to you by the divine or maybe the universe or angels, और आपने उस चीज़ के लिए प्रे किया था कि जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगा वो मैं फॉलो करूँगी या करूँगा, correct? And if you are getting some guidance which you did not expect, okay, you expected some different outcome, but now you are getting some other thing which is good for you, or maybe which your soul needs. Okay, if some truth is being revealed, then please accept that. Stop living in illusion, stop living in past. इल्यूजन से आप टेम्पररी सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है, या फिर उस प्लेजर में आप जी सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे यू हैव टू फेस द रियलिटी. एक पॉइंट पे यू आर सपोज टू एक्सेप्ट द रियलिटी. एट दैट पॉइंट इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, सो इट्स बेटर टू accept the truth right now and take steps and actions accordingly. That's the only thing that I'm getting. Okay, so maybe 2 days, 2 hours are important. Something happened 2 days ago, or maybe something is gonna happen 2 days from now. Maybe you are going to receive something, some sort of communication from this person within next 2 hours or something. It might resonate with a few of you, or maybe I wish it resonates with all of you. Please stop living in illusion. Stop avoiding the truth. And क्योंकि अभी आपको वो हर्ट कर सकता है जो भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन आगे जाके इट वुड बी गुड फॉर यू, good for your soul. And that's basically what divine has planned for you. Okay, that's it. Secondly, I also see you are moving away from something. You want to move away from some issues. So for a few of you, also get that you are moving away from the connection which was being which was getting very toxic for you. A connection, a relationship, or anything that you might be dealing with. You are now realizing your worth. You know what you deserve. जो ट्रीटमेंट आपके पर्सन आपको दे रहे थे वो आपको पसंद नहीं आ रहा था, और मे बी आप जो ट्रीटमेंट आपके पर्सन को दे रहे थे, इट कुड बी एनीथिंग विथ यू. ओके, सो टेक इट एज इट फिट्स. सो जो भी है आपको ज़्यादा पता होगा, बट देर इज समथिंग which is not happening here. Okay, maybe you wished that things could be different for both of you, but कुछ अलग ही रियलिटी सामने आ गई है आप लोगों के सिचुएशन में. मे बी द माउंटेन्स अपीयर वेरी टफ टू मूव. ओके, ये सिचुएशन के साथ डील करना जो भी है, यू आर नॉट इमोशनली डूइंग वेल. आप थक गए हैं एफर्ट्स डाल के इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या फिर एक पर्सन के का वेट करते करते, या फिर उनके पास जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, बट यू वर स्टिल बिलीविंग इन द गुड ऑफ दैट पर्सन. ओके, मतलब कि आप फिर भी ऐसा मान रहे थे कि ये जो पर्सन है वो अच्छा ही है. फिर भी दे हैव शोन द क्रूअल साइड और कोल्ड साइड ऑफ देम, and now you are finally ready to accept that. Okay, and so if you now ignore it, you will have to pay the price later. Okay, so basically the only message that I'm picking up today is stop living in illusion and start accepting the reality. जितना जल्दी वो करोगे उतना जल्दी आप अपने पर्पस की तरफ, अपने हायर सेल्फ की तरफ आप जा पाओगे, and you will actually end up with something which you truly deserve.
okay, which your higher self deserves. Secondly, 10 of wands and 4 of swords we are having here. So please, you know the truth. Again, फिर भी आप unnecessary burden ले रहे हैं. You are having a lot many things to deal with, so much to do, so much to deal with, so many people around, जिनकी वजह से आपने बहुत ही unnecessary बोले या फिर burden ले रखा है खुद पे. If help is present around, please try to take help, okay, of people present around you. It's okay, you will not be termed as a weak person if you ask for help sometimes. So अगर help present है आपके around, then please try go and connect with such people who are trustworthy and helpful. Secondly, आप रात को भी इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपकी हेल्थ, मेंटल फिजिकल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हो रही है. फिजिकल मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. सो दैट्स अनदर इशू दैट यू माइट बी डीलिंग विद. Sleepless nights, that's another thing I'm getting. You already know something and you are still trying to avoid something just because you don't want to lose that particular thing. Yes, that's what I'm getting. आपको पता ही है. See, the sword is lying here, the person is sleeping over it, there are 3 swords hanging on the wall here, okay. So you are already knowing, you are already aware of the truth, still avoiding it, still not ready to face it, just because you expected a particular situation to work out in a particular way and it's not working out right now. So you are not ready to accept what is being shown to you or how it is, you know, taking its shape as it was always meant to be. So that's another message I'm getting. So stop taking unnecessary burden. Stop losing your sleep over such things, or maybe such toxicity or toxic people, or the hurt that you are currently facing. आपको पता है आपको खुद को ही बचा के यहाँ से बाहर निकलना है. Okay, it could be anything, it could be a different case for each one of you because I don't know कि आप कैसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं. फाइन. ओके, another deck we have 9 of swords. So again, losing sleep, worrying a lot, overthinking. You are already getting enough signs. Already आपको साइंस मिल रहे हैं. कुछ गलत हो रहा है उसके साइंस मिल रहे हैं, कुछ सही हो रहा है उसके साइंस भी मिल रहे हैं. ओके, if things are working out in your favor between the two of you, then unnecessary burden या फिर doubts create करके आप चीज़ें बिगाड़ना बंद करें. if things are really working out well, तो पास्ट के हर्ट की वजह से, पास्ट में जो भी आपने फेस किया उसकी वजह से, जो भी आपने इश्यूज फेस किए हैं कनेक्शन में, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं उसकी वजह से आप ये करंट कनेक्शन में भी यही चीज़ें रिपीट कर रहे होंगे, you or maybe your person, and that's the reason why things are not working out or going well between the two of you. Secondly, please stop doing that. Okay, you are not supposed to bring up the old issues. So healing is very important for you guys. Heal yourself so as to stop bringing up back the old issues, which only ruins special connections. Secondly, अगर आपको कुछ चीज़ें पता चली है, if you are aware about a particular fact or something, don't avoid that. We have 9 of cups, moon, 7 of pentacles and 8 of cups. Again 8 of cups, second time. Okay, so from another deck we got the same message, 8 of cups. So you are not wanting to look back, working towards positive energies, working towards moving forward. Forward movement is also there. So if things are really going on well between the two of you, forward movement हो रहा है आपके connection में, it will grow slowly because the roots are getting stronger. So जब भी, if it is taking time, please give it some time to grow, space to grow, air to breathe. Okay, suffocation हो दोनों में से किसी भी एक को, तो ऐसा कनेक्शन नहीं करना है कि जहाँ पे आप सफोकेट हो जाओ और फिर ये कनेक्शन डाई हो जाए, मतलब कि मर जाए. ओके, so next card we had is 7 of pentacles. Try to heal this connection, heal your relationship. There are a lot many factors affecting this connection, and to avoid the negativity or negative influence, you are supposed to heal your connection.
the person here is putting his energies in the plant so that it would act as a catalyst for the plant to grow. तो ऐसे ही आपका कनेक्शन भी हो सकता है, इफ यू आर हैविंग हीलिंग पावर्स, ठीक है, then you can put your energies into your relationship. Maybe you use your hands to heal something, or you know, maybe you are a reiki healer or something. Maybe you are a person, so you are using and putting this, the power which is present in your hands to heal something. So it might be effective for the two of you. Secondly, please give some time and space for this connection to grow. It will take its own time, and at its pace it will be growing out beautifully in its own time. And क्योंकि अगर रूट्स एंड फाउंडेशन स्ट्रांग होगा कोई भी कनेक्शन का, देन बड़े प्रॉब्लम्स भी यू विल बी फेसिंग इजीली. ओके, सो let it take time to grow. Don't rush. And along with that, be aware of the reality as well. Okay, we have the moon card. So again, illusion. You can go and Google these cards, okay, and it will convey the same message to you as well. हाँ, इंट्यूटिवली मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आपको अलग तरीके से, एवरी डे आई माइट ऑल्सो गेट द सेम कार्ड्स ईच डे. रिपीटेटिव कार्ड्स भी मुझे हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन एवरी डे द मैसेजेस आर डिफरेंट. सो मुझे जो भी इंट्यूटिवली लगता है वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ. बट ये जो मून कार्ड है उसका मीनिंग यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट प्लीज स्टॉप लिविंग इन इल्यूजन एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटी. क्योंकि जितना आप इल्यूजन में, होप्स में रहोगे, जो फॉल्स होप्स है जो आपको पता है, उतना ही आप अपने पर्पस से दूर भागोगे, उतना ही अननेसेसरी बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया को आप इनवाइट करोगे अपने लाइफ में. एंड एट द एंड आपको वो ट्रूथ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ओके, इमोशनल वेल बीइंग पे फोकस करो. प्लीज प्रे टू डिवाइन वुल्फ इफ यू बिलीव इन डिवाइन एनिमल्स और डिवाइन स्पिरिट एनिमल्स, जो भी आप बोलो. तो इफ यू आर बिलीविंग इन सच spirit guides, so please start praying to them. So pray to divine wolf. That's another message that I'm getting. Maybe on full moon days you can pray to divine wolf. They are the most powerful days. Full moon day, उस दिन पे आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन वुल्फ को फॉर एनीथिंग. ओके, नॉट ओनली दिस कनेक्शन और पर्सन, बट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग अगेन. ओके, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अगर एक चीज़ के बारे में again and again I repeat the same thing. So if a psychic is basically repeating one and the same thing, then it's your guidance now. You are supposed to accept, you are supposed to be receptive to it, you are supposed to follow it. Okay, depending upon your situation, you are supposed to take it or let it go. Okay, we have 9 of cups. So work on yourself, work on your finances, work on your happiness. You are also हैविंग सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है लाइफ में तो उससे हम दुखी होके कुछ भी जो भी अच्छी चीज़ है उसको इग्नोर करें. एन्जॉय वॉट यू आर ऑलरेडी हैविंग, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू आर ब्लेस्ड विथ. ओके, कई बार ना द आंसर्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड इफ यू डोंट गेट देम, तो आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता. भगवान या फिर यूनिवर्स, इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, देन डिवाइन कभी भी ऐसा नहीं करती कि आपको कोई कुछ चीज़ चाहिए एंड अगर नहीं देते या फिर आंसर्स चाहिए नहीं देते तो डजेंट मीन कि आपकी वो सुन नहीं रहे या फिर आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे. ऐसा नहीं होता. वो आपके बारे में बेस्ट सोचते हैं. जो आपके हायर सेल्फ को सर्व करता है वैसा आपको देते हैं. नॉट समथिंग दैट यू वॉन्ट बट समथिंग दैट यू नीड. वो ऐसी चीज़ आपको या फिर ऐसा पर्सन या कनेक्शंस आपको देते हैं. ओके, फॉर टाइम बीइंग यू माइट थिंक कि मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर why is God making me sad or something, but no, in the long run he will give you such things कि आप ये सारी चीज़ें, पेन जो है वो भूल जाएंगे. एंड प्लस सेकेंडली, जब तक आप ये लेसन्स आपका जो है सरेंडर करना, लेट गो करना, ट्रुथ नहीं बट रियलिटी नहीं बट इल्यूजन में जीना, ये सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक ये लेसन्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे. सो वंस यू आर अवेयर ऑफ द ट्रूथ, यू आर सपोज टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम डे वन. जितना अवॉइड करोगे उतना आपको ही आगे जाके पेन मिलेगा. ऐसा नहीं है कि भगवान आपको कुछ देना नहीं चाहते. ही गिव्स द बेस्ट
ओके, डिवाइन के पास बेस्ट प्लान्स होते हैं ऑलवेज, सो टेक इट एज इट फिट्स. इट्स माई जॉब टू गाइड यू. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. Okay, we have you taught me the true meaning of love. Wow. These could be the messages from your person. We both know that this is not over. Okay. I really tried to make things work. Okay. Okay, these dates could be important for you. 27 September, 9th October. 27 is 9. So 9th October, 9th September could be significant. 9th October is significant. 27th September is significant. 3rd October is significant. 21st November, 18th September, 31st October, and 1st December. So these are the dates. I hope you can see it. Next we have is green or brown color is important. Okay. I have so many fantasies. Oh, wow. Waiting for a confirmation from you. Okay. You take care of me like a mother or a father figure. Oh, wow. So your person is really valuing what you have done for them. Okay. Next here is you heal the parts of me which you haven't broken. Wow. Nice. Better situation. So you are walking towards a better situation, of course, with this 8 of Cups as well, moving away or moving past the issues towards calmer places. We have our love is divine. So yes, I am comfortable around you. Nice. Very nice. Last one will pick up heart to heart conversation. Wow, and amazing messages from your person, from the spirit guides, from the divine. I hope you gain clarity for the situation that you are into, or maybe the one which is confusing you. But please try to uh, connect with your higher self, connect with your spirit guides, and ask for guidance. And please also be humble to accept what is being shown to you. Okay. So, guys, I hope this resonated well with you, and I'll be back with another reading soon. Um, Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Stay blessed.